रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इक्विवेलेंट रेट लॉ। इसमें पहला एग्जांपल 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने। एक तो ये कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा और उसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। बाद में जो चीजें फॉर्म होके ड्यूरिंग द रिएक्शन और उसी में कंज्यूम हो रही हैं, उनके कंसेंट्रेशन को किसी और रिएक्शन या किसी और स्टेप के से हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो दैट वाज वन थिंग। यस, बी स्टार इज जस्ट अ नेम। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें मैंने एग्जांपल्स लेने चालू किए थे। सबसे पहला एग्जांपल जो था मेरा, that was pertaining to H2 and I2 reaction which produces 2HI। और इसमें हमने मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, that looks something like this। ठीक है। Now looking at this rate of reaction and the dynamics of reaction, that is H2 plus I2 giving 2HI, we can conclude that this must be a what should I say, एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और यहाँ पर भी ऑर्डर 1:1 है, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका। तो आई कैन वेरी इजीली प्रेडिक्ट दैट, और इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट दिस माइट बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। अपॉन फर्दर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन it happens to be an elementary reaction. However, another reaction of similar nature, that is hydrogen with halide bromine, that for that the rate law happens to be something very different. It's equal to K1 into H2 multiplied by Br raised to the power half. Now looking at this rate of reaction, it is very much evident to us that this definitely is not a elementary reaction, rather it has to be an multi-step reaction. Is that okay? ये कैसे गेस किया हमने? इसके बेसिस पर, रेट लॉ के बेसिस पर 1:1 था और इधर बैलेंस इक्वेशन में भी 1:1 ही है स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। Therefore, I can guess that this reaction must be or may be an elementary reaction, and for this must be a multi-step reaction. ठीक है। Upon detailed investigation, it appears that the steps of this reaction are: step 1, which is Br2 converting into 2Br as part of fast equilibrium, and then we have step 2 in which H2Br HBr plus H. Step 3, H plus Br2 going to HBr plus Br, which happens to be a fast step again. So from this information, it becomes very much clear that the rate determining step is nothing but step 2, and therefore rate of the reaction
should be same as rate of step 2, which is again nothing but, मान लो इसका K2 है और ये कुछ है further K3, so it should be equal to K2 into concentration of H2 into concentration of Br. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये वाला स्टेप फास्ट इक्विलिब्रियम है, तो द कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 Br, ठीक है, एज स्टेप 1 is a fast equilibrium. The concentration of Br is majorly guided by this equilibrium reaction. That is K equilibrium, that is K1 by K minus 1 will be equal to concentration of Br square divided by concentration of Br2. Is that okay? Or I can say that concentration of Br is equal to K equilibrium into Br2 का concentration whole raised to the power 1 by 2. Am I making sense? And then I can put the value, I can put this value, the concentration of Br free radical can be put into equation 1 to get rate of reaction is equal to rate of step 2 is equal to K2 into K equilibrium, capital K equilibrium, into Br2 का concentration whole raised to the power 1 by 2 into concentration of H2, that is equal to K2 into K equilibrium 1 by 2 into concentration of H2 multiplied by Br2 raised to the power 1 by 2. ठीक है? That is K2 into K equilibrium raised to the power 1 by 2, and then अच्छा ठीक है, ये तो पिछले स्टेप में हो ही गया. I can then multiply these two things to get a equivalent K. ठीक है, अच्छा यहाँ पर K1 लिख दिया है क्या मैंने? It should be K1 should be replaced with
simple K. ठीक है, this K is nothing but K net, or my this K is the multiplication of this two is K, or I can replace or write it like this, KH2 Br2 raised to the power 1 by 2. ठीक है, is this okay? हाँ सर So what I am trying to figure out over here is I'm just trying to make you guys aware of how the steps which we propose they comply with the rate law. ठीक है, not only that, the nature of K, this rate constant of overall reaction, is also sometimes helpful in deciding how many different steps there must be in a given complex multi-step reaction. ठीक है, अब exactly कैसे कैसे उसको अचीव करते हैं, that is not part of this syllabus as of now. We just have to realize that yes, using these steps I can derive rate law, and in reality ये experimental rate law जो होते हैं they help us to backtrack this, backtrack as in to devise these steps. ठीक है, इस चीज को नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सबसे पहला सर काम हो गया करो, नोट। नोट कर लिया, हाँ सर वेरी गुड, चलेगा। फिर मैं दूसरा एग्जांपल चालू कर लेता हूँ इमीडिएटली। एग्जांपल 2, example 2 happens to be another reaction. The overall reaction is is 2H plus 2Br minus plus H2O2 gives us Br2 plus 2H2O. This is a redox reaction. Now, इसके जो mechanism और equivalent rate law है, equivalent or experimental rate law of this reaction is experimental rate law of this reaction is equal to some K net multiplied by concentration of H plus into concentration of R minus into concentration of H2O2. ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, 2H plus plus 2Br minus plus H2O2, but experimental rate law में it is first order with respect to H, first order with respect to Br minus and first order with respect to H2O2. अब इसका obvious सा मतलब होता है क्या कि this reaction has to be in 2 steps or it has to be a multi-step reaction. Is that okay?
experimental rate law suggests that this reaction must be a multi-step reaction. The experimental rate law suggests that this reaction must be a multi-step reaction. Simultaneously, it also tells us that या तो H plus Br minus and H2O2 जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर में इन्वॉल्व होंगे या फिर किसी ऐसे स्पीसीज कोई ऐसा स्पीसीज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूज हो रहा है जैसे पिछले वाले में था और जो कि मे बी कोई फास्ट इक्विलिब्रियम वगैरह से रिलेटेड हो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना you don't have a species which is breaking down like the previous one. ठीक है और यहाँ पर पार्ट्स जो है ना वो एकदम एक्सप्लिसिटली क्लियर है. यू हैव अ H प्लस एंड Br माइनस. तो इस केस में वैसे दैट आर्गुमेंट इटसेल्फ इज नॉट अ सफिशिएंट आर्गुमेंट टू टेल दैट जो भी मैं स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ सिर्फ वही स्टेप्स हैं. There are some other proofs also which has been helpful in deciding that जो अभी मैं लिखने वाला हूँ steps of reaction वही steps of reaction होते हैं. ठीक है. However मेरा काम ये है अभी इस एग्जाम्पल से कि I am giving you guys this rate of reaction, rate law. I am also giving you the steps of reaction. ठीक है. Based on that, I am going to ask you the nature of interaction and the format of interaction which must be taken between the involved particles. So basically इसमें first step जो होता है वो ये होता है कि एक H plus का आयन दूसरे Br minus आयन के साथ interact करता है in presence of H2O2 and they form HOBr plus H2O, and this is a slow step. And then we have another step, step 2, in which the next H plus and the next Br minus interact with HOBr again to form Br2 plus H2. This happens to be a fast process. ठीक है. Now the point here is we know that this is the step of reaction. Step 1 ये है, step 2 ये है, and this is also RDS, rate determining step. So rate law को comply कर रहा है and it is perfectly fine. What I want to know is, you know what is the structure of HOBr? Sorry, H2O2, H plus और Br minus H2O2 मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. मतलब H प्लस 4 एटम्स है, 2 H है और 2 O2 है, 2 O है. उनमें से किसके ऊपर ये H एटम जाकर के इंटरेक्ट कर रहा होगा और किस एटम को Br माइनस अप्रोच कर रहा होगा.
आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? DRH को करेगा। हाँ, यही यही क्लियरिटी। अब आपको सोचना है पहले और फिर बताना है, डायरेक्टली नहीं बताना। ठीक है? हाँ, अभी मैं टर्न कर, अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो व्हाट वेल। और इसमें मैं दो आर्गुमेंट दे रहा था। आई स्टार्टेड विद एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ हैपेंस टू लुक लाइक दिस। अब चूंकि इनकी मॉलिक्यूलैरिटी या ऐसे हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड आर मोर देन दीज थ्री, इनसे दो एटम्स या आयंस, और इसके भी दो आयंस हैं, इसका एक ही आयन है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो चलो ठीक है, बट बाकी दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मेरा बड़ा होना चाहिए था, जो कि है नहीं। That means this reaction must would have been a multi-step reaction. अब इसमें established reaction जो है वो हमारा, या established steps of reaction जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसके बेसिस पर मेरा क्वेश्चन जो था आप लोगों से वो ये था कि having known the structure of H2O2, you guys know the structure of H2O2, how it look like, book structure. So suppose here we have O, another O is going to be here, and we may have a H over here and another H over here. Is that okay? Now, rate determining step में the H plus and Br minus इस स्पीसीज के ऊपर कैसे अटैक करना चाहिए? ये H प्लस कहाँ आकर के अटैक करेगा, Br माइनस कहाँ आकर के अटैक करेगा? कैन वी थिंक ऑफ दैट? सर वापस क्या पूछ सकते हैं? क्या क्या? सर क्वेश्चन वापस करो। हाँ, देखो, हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये सारा इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन ये ओवरऑल रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये है, दैट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रोबेबली ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको देख करके हमने ये दो स्टेप्स पॉस्टुलेट किए, और बाकी सारे आर्गुमेंट्स के बेसिस पर हमने ये प्रूव किया कि यही दोनों स्टेप के थ्रू ये रिएक्शन गो फॉरवर्ड करता है। ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये जो H प्लस एंड Br माइनस H2O2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये मेरा H2O2 का स्ट्रक्चर है। ये H प्लस और Br माइनस इस मॉलिक्यूल में किधर से कैसे अटैक कर रहा होगा, यानी किस पोर्शन के साथ H प्लस इंटरेक्ट कर रहा है, किस पोर्शन के साथ Br माइनस इंटरेक्ट कर रहा है? कैन वी प्रेडिक्ट दैट बेस्ड ऑन दिस? हाँ बोलो। Br माइनस जो है वो H को करेगा, ठीक है। H प्लस जो है वो O को करेगा। ये आर्गुमेंट आया अथर्व देश पांडे की तरफ से। डू यू गाइज अग्री, या आप लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा है? यस, अथर्व, सामंत एंड हर्षित। देखो, अगर ब्लाइंडली बोलोगे तो जो तुमने आर्ग्यूमेंट दिए देश पांडे, दैट होल्ड्स ग्राउंड, ठीक है। बट इन लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन which are here on the board or which you have taken down, your argument is baseless, ठीक है। एग्जैक्टली, HOBr में HOBr का स्ट्रक्चर क्या होता है?
अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा आर्गुमेंट बेसलेस है तो देयर हैज टू बी सम साउंड रीजन। आर्बिट्रली तो बोल नहीं दूंगा कि मेरा मूड नहीं है मानने का तुम्हारे आर्गुमेंट को, तो मैं बोल दूंगा कि भाई तू अपना आर्गुमेंट लेके जा, राइट ना। अभी हर से गायब हो गया, आर्गुमेंट कैसे ले? आर्गुमेंट यही चाहता था कि आप लोग को ये स्ट्रक्चर का पता है। अब बी आर माइनस और एच प्लस कैसे अटैक कर रहा है उसका एक बेसिक आइडिया मिले ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है ना उसका भी एक रोल, डेफिनेट सा रोल होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द रिएक्शन मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तो Yes, sir. left वाला जो वो है इसमें कोई चार्ज नहीं, इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता है। इनिशियली हाँ दोनों में होता है, इसमें भी डेल्टा निगेटिव होता है, इसमें भी डेल्टा निगेटिव होता है। बट एक्सटर्नल स्पीसीज अगर कोई आती है तो ये चार्जेस का डेल्टा पार्शियल चार्जेस जो है इनका फर्दर पोलराइजेशन होगा। जैसे ये माइनस अप्रोच करेगा तो यहां से निगेटिव डेंसिटी इसकी तरफ फ्लो करने लगेगी, और इधर प्लस अप्रोच करेगा तो दैट इज गुड, दिस इज गोइंग टू फर्दर हेल्प इन polarization of negative charge towards this oxygen atom. Are we getting this? sir. अब पॉइंट ये होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म, एक तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना होता है रेट ऑफ द रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, नॉट ओनली दैट, अभी हमारे पास एससीएम जैसी टेक्निक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, which can actually tell us the electron cloud buildups. ठीक है, SEM, scanning electron microscopy, SEM, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम उसका यूज करते हैं और उससे भी हम हेल्प लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का वो शिफ्ट किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, वेयर आर द फिक्स लाइन। ठीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड वीकर है, ये सारी एनालिसिस भी मेनी अ टाइम्स हमें हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वाइस वर्सा। अगर ये पता है, क्योंकि ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है तो यही पता रहेगा, ये तो हमारा गेस वर्क है जिसको हम आर्गुमेंट्स के बेसिस पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी आर सेइंग इज डेफिनेटली राइट। यस, ये भी एक्सपेरिमेंटली ही रहता है। ठीक है, अब कैसे रहेगा, तो उसके लिए देयर आर टेक्निक, वो सारी चीजें अभी नहीं सीखी हैं। अब यहाँ पे ये रहेगा कि पहले से हम HOBr डाल के रखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, या बिल्कुल ही HOBr नहीं रखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर बहुत सारा HOBr रख रहे हैं और फिर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं हो रहा है, राइट, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब ये स्लो स्टेप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आर्गुमेंट्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू suggest what are the steps of reaction. ठीक है, चलेगा। Let us move on to the third example. देखिए फिर से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है, 2NO2 plus F2 gives us 2NO2F
ठीक है, experimental rate law is experimental rate law is equal to K net into concentration of NO2 into concentration of F2. ठीक है, on the basis of this and obviously the product being formed, can we guess the steps of reaction? I know it is very awkward to ask, but फिर भी based on your limited knowledge, what can you deduce from it? क्या क्या पिछले वाले का, इसका इसका कंक्लूजन ये था कि इस तरह की एनालिसिस जो होती है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ reactant, structure of product and structure of intermediate or electronic steps in intermediate is also helpful in deciding the mechanism of reaction apart from the rate law. Is that okay? That was the conclusion of this exercise. Should I write it? Okay. मतलब अभी तक जो मैं बताया है आपको उसमें यही था कि इसके बेसिस पर मैकेनिज्म ढूंढते हैं, राइट? इट इज नॉट दिस ओनली. और साथ में एक चीज ये भी मतलब पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, अपार्ट फ्रॉम दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन, in fact we require entire chemistry knowledge or to decide upon what could be the possible steps of a reaction. जैसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम का हमको यूज पड़ा, ठीक है. थोड़ी देर बाद इसमें हम लोगों को स्ट्रक्चरल पैटर्न या बॉन्डिंग पैटर्न का यूज पड़ा. तो ये दो एस्पेक्ट्स, मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है या इंटरेक्शन बोलो, these are required in order to establish a rate law. ठीक है. तो not only this, other minute things are also, जैसे अभी शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था सूडो वाला, बताया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सूडो वाली चीज को भी हम यूज करते हैं मेनी टाइम्स कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस ऑर्डर में डिपेंड कर रहा है, क्या इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो उसके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है या नहीं खत्म हो रही है. अगर नहीं खत्म हो रही है मतलब सूडो टाइप नहीं है मैकेनिज्म, एक्सेस रखेंगे तब भी उसका इफेक्ट रहेगा. So we do multiple things or we apply multiple analytical techniques in order to ascertain the nature of steps involved in a given. sir. See, लास्ट वाले एग्जांपल में मेरा क्वेश्चन ये था कि H2O2 में कौन सी चीज किधर आकर के इंटरेक्ट करेगी या एटम कौन सा आयन मॉलिक्यूल H2O2 मॉलिक्यूल के किस पार्ट पे इंटरेक्ट करेगा. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर दिया है. और ये एग्जांपल बेसिकली इसलिए लिया था कि इट इज नॉट ओनली द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ व्हिच डिसाइड्स द स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. रादर द फीचर्स लाइक दिस, that is how the cleavage of bonds are taking place, what is the nature of product form, these things are also there in order to decide what could be the possible steps of the reaction. Is that okay? Now हम लोग अभी एग्जांपल 3 कर रहे हैं जिसमें 2NO2 plus F2 is reacting together to form 2NO2F. 2NO2F. Experimental rate law is equal to K into NO2 into F2. Is that okay? अब इसका आउटकम क्या हुआ? What is the outcome of this rate law? And obviously the stoichiometry of the reaction.
ये फर्स्ट ऑर्डर का डायनेमिक्स है, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल, यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी दिख रहा है. दिस प्रूव्स दैट this has to be a multi-step reaction, right? अब steps क्या क्या? This has to be a multi-step reaction. Step 1 could be NO2 colliding or interacting with F2 to form NO2F plus F, and then possibly step 2 में this F may react with another NO2 to form another NO2F. Now this reaction, this part of the reaction has to be fast, whereas the first one has to be slow. हाँ, अब आर्गुमेंट बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बिना आर्गुमेंट के थोड़ी बता दूँ. ठीक है, देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है. ठीक है, NO2 किस टाइप की स्पीसीज होती है? NO2 कैसा स्पीसीज है? Is it a very stable, just stable, diamagnetic, paramagnetic, non-magnetic, ferromagnetic, antimagnetic, मतलब anti-ferro? Fully paired, unpaired, it is an example of odd electron molecule that is paramagnetic in nature. इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा. हेलो, हाँ सर. अथर्व, सामंत और हर्षित, Yes. Yes sir. are we getting this argument? हाँ सर. तो अब मैं बेसिकली ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि ये जो है एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है और यहाँ पर F जो है एक फ्री रेडिकल है. F के फॉर्म में अगर निकल रहा है, दिस हैज टू बी अ फ्री रेडिकल. द टू स्पीसीज आर गोइंग टू रिएक्ट डेफिनेटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ये दोनों फ्री रेडिकल की तरह लगभग बिहेव करेंगे एंड द रिएक्शन विल बी, I mean, it's definitely going to be very fast because इन दोनों को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी. You don't require any further energy to activate them in order to react. ठीक है ना? जनरली मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए ब्रेकडाउन करना पड़ता है और ब्रेकडाउन के बाद ही वो फर्दर इंटरेक्शन करते हैं और उसमें हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. तो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर स्टेप 2 एक्टिवेशन एनर्जी requirement is very low. Is that okay? अब 1 को देखते हैं. 1 में क्या हो रहा है? ये तो फ्री रेडिकल है चलो, बट F2 जो है वो क्या है? प्रॉपर मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव जरूर है बट इट इज अ प्रॉपर मॉलिक्यूल. उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर स्टेप 1, एक्टिवेशन
energy requirement is high. Is that okay? And if that is the case, this means rate constant will be small. Rate constant ये पढ़ाया नहीं है अभी इसलिए परेशान मत होना, बस बता रहा हूँ. Rate constant would be small and hence rate of reaction will be small or slow reaction. Is that okay? अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये और ये इन दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ही ओवरऑल रेट का रिएक्शन डिपेंड करेगा, राइट ना? वेरी गुड. चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी बात पे. हाँ. Let us take example 4. एग्जाम्पल 4 में हमारे पास है the overall reaction NO2 plus CO giving us CO2 plus NO. Is that okay? For this, it is observed that at temperature greater than 500 Kelvin, the rate of reaction rate is equal to some K into concentration of NO2 into CO. So at a temperature greater than 500, it happens to be a overall second order reaction and individually it is going to be a first order reaction. However, at a temperature less than 500 Kelvin, the rate of reaction some K dash into concentration of NO2 square. ठीक है? Suggest the mechanism of a reaction under different temperature conditions.
different temperature conditions. ठीक है, अच्छा अभी मीटिंग फिर से खत्म हो रहा है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से, या डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। इसके बारे में 2 मिनट सोच। हेलो, टू फॉर्म NO gas plus CO2 gas, now below 500 Kelvin. अच्छा, this is also possible because ये क्यों हमको लग रहा है कि होगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूलैरिटी है इस रिएक्शन की एक एक, और रेट ऑफ रिएक्शन में भी दोनों एक एक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। प्लस 500 डिग्री सेल्सियस पर काइनेटिक एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा हो जाएगी, and when they are going to collide, they are going to collide with high kinetic energy, and therefore the possible direct reaction or the possibility of direct reactions become more stronger, ठीक है। इसके लिए ये एक फिजिबल एलिमेंट्री रिएक्शन लगता है, और ऑब्वियसली इसको प्रूव भी किया गया है कि है। नाउ फॉर बिलो 500 केल्विन द मैकेनिज्म of reaction could be or rather than could be, I should write should be a multi-step process that is the steps have been forwarded. अच्छा, इसमें क्या है कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दो स्टेप्स रहेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या रहेगा? द रेट लॉ इज K डैश into NO2 का स्क्वायर, ठीक है। so the two molecules of NO2 should be interacting together. Are we getting this point? दो NO2 molecules interact करने चाहिए तभी उसका ऑर्डर 2 होगा, and that should happen in a rate determining step of the multi-step reaction. Are we getting this point? तो इन दोनों में से कोई एक स्टेप जो होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें NO2 मॉलिक्यूल दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करके कुछ नई चीज बना रहा हो। अब नई चीज क्या बना सकता है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है कि ये प्रोडक्ट का एक फॉर्मेशन करें, या मतलब जनरली कुछ इस तरह की चीज बनाए। यहाँ पे एक अजीब सी चीज बनती है, बता रहा हूं। इट फॉर्म्स NO3 एंड NO, ठीक है। अब NO3 के फॉर्मेशन को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क। इसको बिना हम अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बगैर हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। या अदर एनालिसिस, कुछ और भी एनालिसिस हैं जिसके थ्रू, जैसे इंटरमीडिएट एक सैंपल हमने ड्यूरिंग द रिएक्शन निकाला और उसमें सारी स्पीसीज क्या क्या है उनकी एनालिसिस करी,
तो उसमें ऑब्वियसली इस वाले कंपाउंड का भी ट्रेसेस मिलेगा हमको, एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट टू नो कि अगर ये प्रेजेंट है तो कैसे प्रेजेंट हुआ, एंड देन ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म बिल्ड होएगा। और दूसरा फिर स्टेप जो होएगा दैट इज गोइंग टू बी NO3 प्लस CO गिविंग अस NO2 plus CO2. Is that okay? And this is going to be definitely a fast step process. ये बात समझ में आ रही है? Okay. अब इनमें से कौन सा स्टेप 1 होगा, कौन सा स्टेप 2 होगा, ये भी हम आर्गुमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ के लिए डेफिनेटली स्लो वाला स्टेप 1 होगा क्योंकि NO3 फॉर्म हो रहा है और उसके बाद CO उसके साथ कंबाइन कर रहा है, बट हमेशा ये फर्स्ट स्टेप ही स्लो रिएक्शन होगा ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली ये है कि दिस रिएक्शन हैज टू बी स्टेप 1 क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ NO3 हो रहा है, ठीक है। 2 NO2 आर कंबाइनिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस NO3 प्लस NO slow followed by a fast reaction that is NO3 plus CO giving us CO2 plus NO fast. Okay. Post this, the next example we are going to take is now this one is a difficult one. Or it is more argumentative, we can say. Example 5. The overall reaction is two NO plus O2 gives us ठीक है, and the rate law for experimental rate law of the reaction is experimental rate law is equal to A into NO का square into O. Now looking at this rate law, which of the following could be a possible
mechanism of this reaction. Mechanism is an elementary reaction mechanism मतलब क्या हुआ, एक ही स्टेप पे तीनों आ रहे हैं, जोर से कोलाइड कर रहे हैं और नया मॉलिक्यूल दो बन जा रहा है। तो उसमें प्रॉफिट है। हाँ हाँ, बात सही है, एकदम सीधा सीधा सोचेंगे सर, कौन टेढ़ा मेढ़ा सोचेंगे। रेट लॉ दिया है, रेट लॉ कंबाइन भी कर रहा है, मॉलिक्यूलर के तीन, वो भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से सोचो थोड़ा सा। सर वो ये जो रिएक्शन होगा एनो जो वाला वो स्लो वाला रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप होगा तो ठीक है, अगर मल्टी स्टेप है तो ये किसी स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लिखा गया होना चाहिए, और विच इज फिजिबल ऑल्सो, क्योंकि ऑक्सीजन की ब्रेकिंग एनर्जी जो होगी अल्टीमेटली ऑक्सीजन की ब्रेकिंग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको, तभी ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों एनओ में, और वो एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी डेफिनेटली हाई होगी, और अगर वो हाई होगी सिंगल स्टेप रिएक्शन में सिर्फ कॉलिजन के बेसिस पर वो एनर्जी तो प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, so there has to be something else in process, therefore elementary reaction can be definitely neglected, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा। Are we getting this point? However, it is there, I mean there is a possibility the B could be a mechanism involving B mechanism involving step 1 NO gas plus NO gas giving us N2O2 with equilibrium constant heat equilibrium, and this is a fast process followed by step 2 where this combines with, or where this interacts with O2 to form 2NO2, and this happens to be a flow step. The third possible one is mechanism involving step 1 NO gas plus O2. Again the same problem. Under fast equilibrium, maybe K equilibrium, forming O and NO
This is fast, followed by step 2. NO plus OONO under a slow process forming 2NO2. ठीक है. अब रेट लॉ डिडक्शन अगर हम चालू करेंगे तो तीनों का ही रेट लॉ जो होगा वो सेम आएगा. इफ वी वांट टू ट्राई, पहले वाले का तो एलिमेंट्री है तो कोई डाउट ही नहीं है, सेम रहेगा, यही रहेगा. दूसरे वाले के लिए रेट लॉ अगर लिखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी rate is equal to K dash into concentration of N2O2 into concentration of O2, और ये फास्ट इक्विलिब्रियम है तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू N2O2 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय NO का कंसेंट्रेशन. ठीक है. दैट इम्प्लाइज N2O2 is equal to K equilibrium concentration of NO. ठीक है. और इसको अगर मैं यहाँ पर डालता हूं तो R will become K dash into K equilibrium NO का स्क्वायर into O2. तो इसका भी नेट रेट जो होगा वो यही आएगा और नीचे वाले का भी नेट रेट वही आएगा. फर्स्ट वाला फास्ट इक्विलिब्रियम है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OONO जो होगा that will become K equilibrium multiplied by NO into O2. ठीक है. This divided by concentration of this into concentration of O2 is K equilibrium. K equilibrium into this का concentration will be concentration of this. अब हमको पता क्या ये वाला है मेरा स्लो स्टेप, तो रेट will be equal to K double dash into concentration of NO into concentration of OONO. इसके बदले में ये रखेंगे तो K डबल डैश yes could not distinguish between which one is the this thing, क्योंकि तीनों के लिए रेट लॉ जो आ रहा है मेरा वो सेम ही आ रहा है. इज द सेम थिंग विच इज देयर इन द ओवरऑल रेट लॉ जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ. राइट. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहाँ पर डिफरेंसेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? हेलो. तो वो क्या है? NO3. हेलो. हाँ. Yes, sir. तो डिफरेंसेस हम कैसे करेंगे? तो डिफरेंसेस पहला जो बताया मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के रिगार्डिंग, एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी टू हाई एंड देयरफॉर that will possibly not be the case. ठीक है. Second thing is this one, यहाँ पर NO is reacting with O2 to form this kind of bonding, जहां पर NO पॉसिबली लोन पेयर डोनेट कर रहा है या कोऑर्डिनेशन में ले रहा है O. ठीक है. ना कोऑर्डिनेशन में लेना मतलब ये OO के साथ जो बॉन्डिंग है N की, इसका नेचर क्या होगा दैट इज नॉट वेरी मच क्लियर. ठीक है. अगर प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक्चुअली यहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी. दैट इज व्हाट NO कैन फॉर्म. ये बात समझ में आ रही है? N के पास कितने ये रहेंगे? यही रहता है ना इसका.
4 2 6 एक साथ, हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये भी। आर वी गेटिंग दिस? अब ये इंटरेक्ट कैसे करेगा O2 मॉलिक्यूल के साथ? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड करे, और क्या पॉसिबिलिटी है जिससे ये बॉन्ड कर सकता है? इसके लोन पेयर्स जो है इसको डोनेट हो। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, समझा। दोनों ही सिनेरियो में द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग टू बी हाई, या फिर ऐसे बोलो कि द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी रेयर, या अगर रहेगा भी तो दिस इज गोइंग टू बी टू अनस्टेबल कंपाउंड। इज दैट ओके? ये सारे आर्गुमेंट्स होते हैं इसके नॉन फॉर्मेशन के लिए, और सबसे बड़ा ये जो होता है वो ये होता है कि इसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, NO3 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बेस्ड ऑन दिस आर्गुमेंट वी कैन कंक्लूड दैट थियोरेटिकली तो तीनों विजिबल लगता है कि पॉसिबल है रेट लॉ के बेसिस पर, बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन सजेस्ट दैट इस इंटरमीडिएट का प्रेजेंस होता है वहां पे रिएक्शन वेसल के अंदर में, एंड देयरफॉर रिएक्शन बी और मैकेनिज्म बी इज द राइट मैकेनिज्म, rightly proposed mechanism for this overall reaction with this rate law. Is that okay? So logo O2 का bond. हाँ, that is supportive argument कि यहाँ पर ये O2 का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसकी वजह से रेट जो है वो स्लो है, और ये एक्टिवेटेड कंपाउंड है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट ये एक्टिवेटेड कंपाउंड भी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो दीज आर द सपोर्टिव आर्गुमेंट जो इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट स्पीसीज व्हिच एक्चुअली कंफर्म्स द दिस मैकेनिज्म। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। कौन सा? इसका प्रेजेंस रिएक्शन वेसल के अंदर में एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म बी। मैकेनिज्म ए क्यों नहीं होगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की वजह से, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मैकेनिज्म सी क्यों नहीं होगा? फर्स्ट स्टेप, अच्छा इसके लिए दो चीजें, एक तो इसका बनना नहीं है पॉसिबल, ठीक है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, इस तरह से बोल सकते हैं, और दूसरा O2 की ब्रेकिंग करी हुई है, O2 का रिएक्शन कराया व्हिच इज रिलेटिवली स्टेबल, और इसको फास्ट बोला हुआ है। इज दैट ओके? ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं थोड़ी सी। दिस इंटरेक्शन कैन नॉट बी फास्ट इंटरेक्शन, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। और हम इस तरह से आर्गुमेंटेटिवली और आर्गुमेंट्स के बेसिस पर मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं, एक्सपेरिमेंटल आर्गुमेंट्स ऑब्वियसली। द नेक्स्ट एग्जांपल इज should I write the argument या ध्यान रहेगा? यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ, नहीं कुछ कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो।
reaction involving example 6. We have a reaction A giving us B plus C in presence of a catalyst M. ठीक है? Where M is the catalyst. The possible mechanism is maybe step 1, A plus M giving us A1, A minus 1, A star plus M and step 2, A star then breaking down into B plus C. Now we don't know which one is fast step and which one is slow step. We do not have detailed idea of the fast and slow step, fast and slow steps of the fast and slow steps
of this multi-step reaction. Reduce the general expression अच्छा फिर से ज्वाइन कर लेना मीटिंग बंद होने वाली है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन and then find the relevant expression if step 1 is fast equilibrium. For any general reaction, rate of reaction is going to be equal to rate of formation of product by its stoichiometric coefficient, which is equal to K2 into A star in this case. And not only this, the A star is also A star is an intermediate that is in steady state the concentration of A star would be constant or dA star dt will be equal to 0. ठीक है? Now dA star dt जो है rate of change of concentration of dt can be attributed as rate of formation of A star minus rate of consumption of A star. रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है ए स्टार का यहां से अगर देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एम ठीक है और कंजम्पशन रेट क्या है पहला तो ये वाला कंजम्पशन रेट है और दूसरा ये वाला कंजम्पशन रेट है so rate of formation of A star is K1 into concentration of A into concentration of M minus K minus 1 into concentration of A star into concentration of M minus K2 into concentration of A star. ठीक है? Now this is the dA star dt in steady state
dA star dt is equal to 0. That implies, अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ K1 concentration of A into concentration of M minus K minus 1 A star concentration of M minus K2 A star is equal to 0. Therefore, or that implies K minus 1 A star M into plus K2 A star is equal to K1 concentration of A into concentration of M. ठीक है, और A star into K minus 1 M plus K2 is equal to K1A into M, or concentration of A star is equal to K1A and divided by K minus 1 concentration of M plus K2. Is that okay? Therefore, a rate of reaction would be equal to K2 into concentration of A star, that is equal to K2 into K1 A into M divided by K minus 1 into M plus K2. Is that okay? तो अगर जनरल रिएक्शन रहता है जिसमें स्टेटेड नहीं है कुछ भी, तो जनरल इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दैट इज गोइंग टू गिवन समथिंग लाइक दिस. अब इसमें हम लोगों को फर्दर ए और बी पार्ट जो है वो हमको प्रूव करना है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू राइट अवे, अभी कर लेंगे. बट यहाँ पर बेसिक आइडिया मुझे ये देना था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है that happens or that looks something like the overall rate of reaction when we don't know which one is the fast step, या शायद दोनों almost equal rate पर चल रहे हैं. अगर फास्ट इक्विलिब्रियम भी बहुत फास्ट नहीं है, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, एंड साइमल्टेनियसली कंजम्पशन रिएक्शन जो है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन वो भी सेम स्पीड पर चल रहा है. तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ M जो है K2 K1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ M, ये तीनों चीजें मिला करके मे बी रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करें. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अब हमारे पास दो सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं. पहला जो है वो ये है, हमने अज्यूम, अगर हम अज्यूम करते हैं कि पहला वाला स्टेप जो है मेरा दैट इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप, तो हाउ द इक्वेशंस आर गोइंग टू चेंज इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. ठीक है, और हाउ द इक्वेशन इज चेंज, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR दैट इज इक्वल टू K2 into K1 concentration of A into concentration of M divided by
K minus 1 M K minus 1 M plus K. पहला सिंप्लीफिकेशन क्या है? If step 1 is fast equilibrium. फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? फास्ट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा? Can I say that it is possible only when K1 is much greater than K minus 1? And greater than equal. फास्ट इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्लो रहेगा, राइट ना? हर्षित एंड अथर्व सामंत, Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? अब ये अगर होल्ड ट्रू करता है, इफ K1 इज मच ग्रेटर देन K minus 1, तो इस K1 या K1 से बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और हाँ ठीक है, K1 has to be greater than much greater than K minus 1, and not only that, K2 will be also K2 will not K2 is ठीक है. That implies, ये चीज तो एक इम्प्लाई करता ही है कि K1 should be much greater than K minus 1. ठीक है. दूसरी चीज जो हमको पता चलती है वो ये पता चलती है कि K2 has to be smallest. Is that okay? That is, K2 has to be lesser than or much lesser than K minus 1 concentration of M. ठीक है? जब हम ये बोलते हैं कि कोई स्टेप दूसरे स्टेप के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है, तो ये जनरल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, इसके किसी एक कंपोनेंट को बेसिकली हम फॉरगॉन करते हैं. ठीक है? जैसे यहां पर हम किस चीज को फॉरगॉन कर रहे हैं? K2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू K1 माइनस K minus 1 M के रेस्पेक्ट में. ठीक है? अब हम फास्ट इक्विलिब्रियम उसको तभी बोलते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन वी कांट से दैट स्टेप 1 इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम. ये बात समझ में आ रही है? जब ये सेटिस्फाई होगा कंडीशन, तभी हम बोलते हैं कि दिस इज अ फास्ट स्टेप 1 इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप. अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन वी कांट से दैट स्टेप 1 इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. हाँ अब सर. if this is true, then ROR will become what? ROR will become equal to K2 K1 concentration of A into concentration of M divided by
K minus 1 concentration of M. These two will get cancelled and we will have K2 K1 upon K minus 1 into concentration A, that is K2 into K equilibrium into concentration A, which would have been otherwise found out simply by using the direct relationship. क्योंकि पहला वाला अगर फास्ट इक्विलिब्रियम हो जाता तो K इक्विलिब्रियम क्या होता, concentration of A star divided by concentration of A. That implies concentration of A star would have been equal to K equilibrium into concentration of A. Is that okay? और रेट ऑफ रिएक्शन जो था मेरा वो तो तब भी वही रहता है, K2 into A star. Is that okay? That is K2 into K equilibrium into concentration of A. ये बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट हम करते हैं जो हमने पहले मेथड लर्न किया था, और ये you can say more robust derivative method, so you are going to get the same expression. अब दूसरी चीज, मान लो ये वाली चीज ना हो करके दूसरी चीज होती, दैट इज पहला वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है, इट वुड हैव बीन स्लो इक्विलिब्रियम. ठीक है, बी स्टेप 1 would have been slow step. That is step 2 is fast. step 2 fast है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कब ट्रू होगा, जब K minus 1 concentration of M will become much lesser than K. Are we getting this point? Step 2 is fast if this is being satisfied or vice versa. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Therefore ROR क्या होगा इस कंडीशन में, ROR would become equal to K2 K1 concentration of A concentration of M divided by K minus 1 concentration of M plus K2, which will be equal to K2 K1 concentration of A concentration of M by K2, which is equal to K1 concentration of A plus K1. ठीक है, और ये अदरवाइज भी हो जाता है, क्योंकि पहला वाला रिएक्शन अगर बहुत स्लो होता तो इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो एनीवे कंसिडरेबल नहीं होता, क्योंकि उसका रेट जो होता बहुत स्लो रहता. ये बात समझ में आ रही Yes, है? sir. तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, और ये अदरवाइज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, we'll take another example of the similar nature. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अब आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी है. ठीक है, यू कैन से एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन भी है ये. ये वाला पेज या पिछला पेज था? आप लोगों ने कहाँ तक नोट किया है? ये हो गया था यहाँ पर. ये by dt is equal